Yes. Good evening to all of you, my dear friends. And as you know that this is the festival time, but knows that for students each and every day is a festival time, and that's why I am going to discuss some important case. As you know that regarding the unit number 5, there are 3 cases prescribed in your syllabus. And as you know that the third case is that Abhay Singh Chautala versus CBI. What is the name of the case? Abhay Singh Chautala versus CBI. As you know that I always say that the in your case mate whatever name has been written, that is not the perfect name. Exact name of the case is that Abhay Singh Chautala and another and another means here appellants. There are more than one appellants. In this case, there are two appellants. One is the Abhay Singh Chautala and other is that Ajay Singh Chautala. As you know that everyone knows about the Om Prakash Chautala. Both are son of Abhay Singh or Om Prakash Chautala. It means here in this case, here there is a simple chart. With the help of chart, you can read here that one is the Om Prakash Chautala. His sons are Ajay Singh Chautala, Abhay Singh Chautala, and as you know that Dushyant Singh Chautala, who is the current time Deputy CM of State of Haryana, is the son of Ajay Singh Chautala. He is a grandson of Om Prakash Chautala. This is the point. And in this particular case, who is the appellants? In this particular case, two persons are appellants. One is the Abhay Singh Chautala and another is that Ajay Singh Chautala. But as you know that I had already told you that if there are more than one appellants, the name of the first appellants is mentioned and regarding the other appellants and another or other whatever the case may be is mentioned. So name of the case is Abhay Singh Chautala and another. Okay, Abhay Singh Chautala and another. Here Abhay Singh Chautala versus CBI, Ajay Singh Chautala versus CBI. There are two appeal, and after that, in the legal sense, we can say that Abhay Singh Chautala and another versus Ajay Singh Chautala. देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि सेमेस्टर एग्जाम में ठीक है अभय सिंह चौटाला वर्सेस सीबीआई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही होता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो आपके लिए हर एक चीज बहुत ही मायने रखता है। अगर आपके दिमाग में है कि एंड अनदर भी है तो उस केस को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी चीजें आप आसानी से समझ जाओगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि तुम लोग हमेशा ओरिजिनल जजमेंट पढ़ा करो, केसमेट का जजमेंट मत पढ़ा करो। केसमेट में 4-5 पेज का कट पेस्ट होता है। कट पेस्ट में होता क्या है कि कहीं कुछ चीजें रिदीम नहीं बन पाती है, समझ नहीं पाते हम लोग। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर हम एविडेंस में कौन सी बुक पढ़ें, बटुकलाल पढ़ें या मुनीर पढ़ें, कई बच्चों का आता है। वैसे मैं रिस्पॉन्स देता नहीं हूँ क्योंकि फाइनली दुखी पड़ता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बटुकलाल की जो बुक है उनकी जो वॉल्यूम की बुक है वो सिस्टमेटिक है, वो बेस्ट बुक है, ऑथेंटिक है। लेकिन उसको कट पेस्ट करके जो बच्चों के लिए बनाई गई है 400-500 पेज का जो बनाई गई है उसमें रिदीम नहीं आ पाता है। तो मैं भरसक हमेशा पढ़ा तो हूँ मैं भी बटुकलाल ही, क्योंकि वहां पे बेचू यही चलता है, ज्यादा क्रेज इसी का रहता है। लेकिन बाद में रियलाइज किया कि नहीं, मुनीर की बुक बेटर होगी एटलीस्ट बटुकलाल के कंपैरिजन में। इसी तरह से यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ द केस हियर सी हाउ आई हैव रिटन दैट अभय सिंह चौटाला एंड अनदर, ओके, and another, these words are missing in your casemate versus CBI. Okay,
Regarding the before starting any discussion of any case, I always discuss the previous year question paper. And here the previous year questions paper, you can see that DU LLB previous year question paper. And the first question is here 2016. But this question was asked in 2016. But I have modified, I have inserted years in this problem. So I have removed the year of the क्वेश्चन. देखो बेसिकली एक क्वेश्चन तुम्हारे सेमेस्टर का ही है, लेकिन पिछला क्लास में जब पढ़ा रहा था तो हमें समझाने में प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चों को ग्रेस्प नहीं हो पा रहा था, तो मैं उनको एग्जाम्पल दिया। तो मैं उस एग्जाम्पल को मैं सोचा कि कैसे इसको प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो मैंने इसमें कुछ चीजें ऐड कर दिया, क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या क्या मैंने इंसर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे ईयर इंसर्ट कर दिया। जो भी ईयर यहाँ पर है, ईयर क्वेश्चन मेन क्वेश्चन में नहीं था, जो 2016 में पूछा गया था, हमने एक प्रॉब्लम बनाते हुए उसी क्वेश्चन पर हमने क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया है। ईयर मैंने इंसर्ट किया है, बाकी कुछ अलग चीजें हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन और पूछा गया है 2017 में भी, इसमें भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, उनको समझाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ही वाज ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री में हमने क्या ऐड कर दिया, हमने मिस्टर अमित शाह ऐड कर दिया। हमने क्या ऐड कर दिया, मिस्टर अमित शाह ऐड कर दिया। तो मतलब जब हम मिस्टर अमित शाह को ऐड करते हैं तो क्वेश्चन में 17 का भी ए भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर अमित शाह इस पीरियड में मतलब होम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिस्टर अमित शाह को इंसर्ट कर दिया ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ना हो, और हमने यहाँ पे मिसेस निर्मला सीतारमन को भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। बाकी जो भी प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम है, मैं उसमें मॉडिफाई नहीं किया हूँ। तो चलिए हम पहले सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, उसका आंसर रिप्लाई करेंगे, और फिर हम कल आपको डिस्कस करेंगे थ्रोली कि अभय सिंह चौटाला वर्सेस सीबीआई का फैक्ट क्या था, इशू क्या था। कल हम थ्रोली मतलब कल का मतलब जो भी हो, नेक्स्ट क्लास जो भी आएगा हम उसको थ्रोली डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या बनता है। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, here the yum is an MP in the Lok Sabha. Yum is the MP in the Lok Sabha. As you know that here M is the name of several famous politicians. You can take example of Yum, that is the Mr. Manmohan Singh, Mr. Modi, Mr. Mulayam, Mr. Mayawati, Mrs. Mamta. You can take name of several politicians, but don't use name of any politicians, otherwise opposite party may be angry. तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि करप्शन का मामला है, अगर किसी को तारीफ करने का होता तो चलो किसी का नाम रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे मिस्टर मोदी, मनमोहन, मुलायम, ममता और मायावती के रखने की बजाय किसी का भी नाम रख लीजिए जो आपकी नजर में करप्ट दिखता हो, और बाकी चीजें आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यम आप मेरे नाम से भी रख सकते हैं, मुरारी के नाम से भी रख सकते हैं, जो भी हो, एक व्यक्ति है, एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम यम है, ठीक ना। तो यम की फिलॉसफी क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे चलिए हम मायावती मुलायम को ले लेते हैं, तुम लोग कहोगे सरकास्टिज्म कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम किसी का नाम ले लो, मान लीजिए यम, दैट इज द मुलायम। Mr. Mulayam was the MP in the Lok Sabha. He was the MP in the Lok Sabha from the Karol Bagh constituency. Karol Bagh constituency is situated in the Delhi. When he was MP in the Lok Sabha, he was the MP since 2004 to 2009. 2004 to 2009, he was the MP in Delhi. It means Mr. Yam was the Lok Sabha member during this particular period. And regarding the one line, I wanted to say that when I was discussing the Kalicharan Mahapatra versus state of Odisha, in that case there was one issue. Issue was that whether previous sanction under section 19 is required in the case of retired public servants also. Answer was that no. In the case of, what was the ratio of the case? In the case of Kalicharan versus state of Odisha, it was observed that if there is a retired public servants, in that case there is no need to take the previous sanction under section 19.
ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। हम लोग देखिए 2018 के अमेंडमेंट के बाद तो टोटली पूरा लॉ ही चेंज हो गया। हम 18 अमेंडमेंट से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जजमेंट के रेशियो की बात कर रहे हैं जो कि 1998 में डिसाइड हुआ था काली चरण का जजमेंट। उसमें हम लोगों ने यही देखा ना कि देखो हमने क्या किया था, हमने पब्लिक सर्वेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट एक्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स का था और दूसरा रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स का था। The acting public servants के regarding the each and every law says that yes you have to take the previous sanction। लेकिन retired public servants का law जो है what is the law? तो at that time I told you that in that case you have to divide the law in two parts according to the judgment and according to the amendment। According to the judgment of the Kali Charan versus State of Odisha, previous sanction in case of retired official is not necessary. But after the amendment in 2018, even in case of retired public servants, you have to take the previous sanction. Okay. So here, what is the point? According to him, he was a corrupt politicians who was the MP during the 2004 to 2019 from the Karol Bagh constituency. Yum had earned a lot of money. During that time, what he did, he earned a lot of money and property. Earning the money and property is not the bad things. It is not the crime. But when it converts into crime, if you are earning the money and property which are highly disproportionate from his known source of income, which is highly disproportionate from his known of income, that is the crime. After that, FIR has been lodged against him and he was put on trial in 2015. He was tried in 2015. Now, here the heading I have added, even the heading I have added so that you can frame the question even in semester exam. What is the issue as well as heading? मतलब क्वेश्चन से तुम आर्गुमेंट भी इशू भी निकाल सकते हो और उसी से तुम कंटेंशन भी निकाल सकते हो। मतलब लाइन एक ही है, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन से इशू भी ड्रॉ करना है और उसी क्वेश्चन से तुम्हें कंटेंशन भी ड्रॉ करना है। और सेमेस्टर एग्जाम में क्या करना, एक हेडिंग बना देना इशू का और एक हेडिंग कंटेंशन का बना लेना और क्वेश्चन से दोनों निकल जाएगा। ये स्मार्ट टीचिंग तो नहीं लेकिन रीडिंग है जो भी हो। अब यम कहता है, यम रेज ऑब्जेक्शन ऑफ नॉट टेकिंग प्रीवियस सैंक्शन अंडर सेक्शन 16 अंडर सेक्शन 19। ही वाज सेइंग दैट मिलर्स नो प्रीवियस सैंक्शन वाज टेकन फॉर प्रोसीडिंग फॉर द ट्रायल as prescribed under section 19. Why? According to him, he is the public servant from the South Delhi Lok Sabha constituency and you have to decide. He was saying that here one important point, here the was and here the is, ये अंतर है। जब उसने क्राइम किया, जब वो करप्शन किया तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी करोल बाग थी, ठीक ना, तो वाद था। अब उसके खिलाफ जब केस चल रहा है 2015 में तो कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ नहीं है, सॉरी, तब वो फिर से इलेक्शन जीत चुका है और वह दिल्ली लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका कहना है कि एट प्रेजेंट टाइम मीन्स इन 2015, एट प्रेजेंट टाइम आई एम द पब्लिक सर्वेंट्स, so you can't take action, you can't proceed whatever alleged crime had been committed during this period. Now you have to decide whether he will get the benefit of section 19 or not. एक मिनट और लूंगा, प्रॉब्लम समझ जाओ, बस इतना सा है, बाकी चीज समझ में आ जाएंगी। ये कहना है, अब क्वेश्चन आपको डिसाइड करना है कि क्या अगर एक बार व्यक्ति एमपी बन गया और उसकी सीट दोबारा जीता, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर राहुल गांधी को हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि पहले वो अमेठी से जीते, दूसरी बार वो केरला जाकर के वायनाड से जीते, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो चेंज हो गई। अब मान लीजिए कि मिस्टर राहुल गांधी पर केस चल जाए
कि आपने जब अमेठी में जब 2014 से 2004 से 9 तक में जब आप एमपी थे, उस समय आपने अमेठी में बहुत सारा चोरी किया, गबन किया, प्रॉपर्टी का मिसयूज किया, इलीगल वे में कॉन्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पर उनका कहना है कि नहीं, अब मैं वायनाड सीट से जीत चुका हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्चुअली गलत है, लेकिन फिर भी देखिए, अब उन्हें कहना है कि मैं वायनाड सीट से जीत चुका हूँ, इसलिए आप मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको एक्शन लेना है तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर इन सच केस प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी और नॉट। ठीक है, आंसर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड वेदर एमपी एमएलए आर पब्लिक सर्वेंट्स आर नॉट। The point is, see, the here answer is that first of all you have to decide the MP MLA. If he is not the public servants, no question arise regarding taking the previous sanction. So first of all you have to decide whether MP MLA are the public servants or not, whether M is the public servant or not. In the case of PB Narasimha Rao versus State, Honorable Supreme Court held that MP and MP's MLA are also public servants for the purpose of prevention of corruption. So now M is the public servant. One dispute is resolved. Regarding the sanction under section 19, what is the point is that here there are two answers of these questions. Why there are two answers? But problem एक और दो आंसर कैसे हो सकते हैं? या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। अब इसका आंसर मैं दे रहा हूं यस नो, मतलब यस भी है नो भी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का रीजन ये है, अब मैं डिस्कस करूंगा। देयर आर टू आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज वन इज बेस्ड on the judgment and ratio of the R.S. Nayak versus A.R. Antule and Abhay Singh Chautala versus CBI. It means one answer is based on the leading cases. One answer is based on the leading cases. It means, as you know, that R.S. Nayak case was decided in 1984 and Abhay Singh Chautala was decided in 2011. My point is that both the cases were decided before 2018 amendment. So, according to the ratio of these two cases, answer is that no, sanction is not necessary. But after the amendment, according to the Prevention of Corruption Act, answer will be something different. According to this amendment, sanction is necessary. See, the point here is that according to the former, that is according to the cases, sanction is not necessary. Okay, but while in the latter case, sanction is necessary. See the difference. One say sanction is not necessary, other is that sanction is necessary. My point is that in one line, I had already written in the group that whatever ratios were laid down in the R.S. Nayak versus A.R. Antule and Abhay Singh Chautala versus CBI had been totally changed by the Prevention of Corruption Amendment Act 2018. एक बात और मैं बताऊं, इस क्लास से पहले मैं इस अमेंडमेंट की बड़ी तारीफ कर रहा था कि यहाँ मोदी जी का बहुत ही मतलब जबरदस्त अमेंडमेंट है। लेकिन आज मैं जब इस जजमेंट को पढ़ा, इस जजमेंट को पढ़ने के बाद हमें लगा कि नहीं, ये बहुत ही डेंजरस अमेंडमेंट है, इतना वाइडर प्रोटेक्शन देना भी ठीक नहीं है। चलिए मैं इस जजमेंट को मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा, इस अमेंडमेंट को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं क्रिटिसाइज करूंगा, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूंगा। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द केस ऑफ द आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले एंड अभय सिंह चौटाला वर्सेस सीबीआई। According to this, taking sanction under section 19 is not necessary. And if not necessary, what would be effect of this judgment? Narrower protections for public servants. Narrower protection for the public servants. This is the effect. But what would be another answer after the amendment, that is after the PC amendment 2018? According to the section 19, clause 1 explanation. Taking sanction under section 19 is necessary.
See, is necessary? Not necessary. What would be effect of such amendment? It will give wider protection for the public servants. वाइडर प्रोटेक्शन फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स में क्या होगा, जानते हैं क्या होगा? इसका ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इसके एक्सेप्शन बनाने चाहिए थे। इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान लीजिए कि मैं सपा पार्टी से हूँ, सपा पार्टी से मैं 4 से 9 तक जबरदस्त करप्शन मारा, ताबड़तोड़ मतलब करप्शन के रिकॉर्ड लगा दिया और एफआईआर हमारे खिलाफ लाज हो गई। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? अब मैं कैसे बचूं? ये तो मेरा पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। अब उस करियर को खत्म होने से बचाने के लिए एक ही उपाय है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं। क्यों बीजेपी ज्वाइन कर लूं? क्यों? क्योंकि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में गवर्नमेंट है। अब सेंटर में गवर्नमेंट का फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा सैंक्शन देने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जब बीजेपी अपने पार्टी का रहूंगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ सैंक्शन देगी ही नहीं, तो हमारे खिलाफ केस पेंडिंग ही रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा और सालों साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी रूलिंग पार्टी हो, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी आप देख लीजिए, 6 साल के दौरान 7 साल लगभग पीरियड होने वाला है, रूलिंग पार्टी का कोई भी चीफ मिनिस्टर्स या एमपी एमएलए किसी भी करप्शन के मामले में कोई भी केसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगर बाय चांस दुर्भाग्यवश एक आध एफआईआर लाज भी हो जाए तो मान के चलिए कि वहां सैंक्शन मिलेगा ही नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इतना वाइडर पावर होगा, वो भी तब जबकि एमपी एमएलए जजेस ईच एंड एवरी वन कमिंग अंडर द डिफिनीशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, व्हाट वुड बी हैपेंड? हमारे कहने का मतलब कुछ न कुछ इसका लिमिटेशन बनाना चाहिए कि इस तरह का एक स्पेशल बॉडी होना चाहिए जिसके थ्रू ये सैंक्शन देने का एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी तरह से अगर गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि पूरा पॉलिटिकली ही रहता है, लेकिन कुछ मैटर रहता है इस तरह का इन्वॉल्वमेंट। तो इस तरह का मैटर में ध्यान रखना होगा कि इतना वाटर प्रोटेक्शन ठीक नहीं है। जैसे अब इसमें देख लीजिए आप, इसमें 409 तक करप्शन करता है, ठीक है कि किसी और पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें सैंक्शन दे दी है या जो भी हो, इसमें अगर इस जजमेंट का अगर रेशियो माने तो बहुत ही अच्छा रेशियो है कि भाई अगर इस तरह का करप्शन हो रहा है तो ठीक है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो गई, आप एक बार हो गए, इस मामले में आपको सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और जब सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी तो आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कोर्ट अपना कॉन्विजेंस लेगी और आपके खिलाफ केस स्टार्ट कर देगी। आप चाहे सपा ज्वाइन कर लीजिए, बसपा भाजपा कोई भी ज्वाइन कर लिए, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। लेकिन जैसे सैंक्शन लेना मैंडेटरी होगा, रूलिंग पार्टी को ज्वाइन करते ही आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। इसका जजमेंट है। अब इस जजमेंट का अगर हमें रिप्लाई करना होगा एक लाइन में, तो आई हैव टू से दैट इन दिस केस according to the ratio of Nayak and Abhay Singh case, taking sanction is necessary, but after the Prevention of Corruption Amendment Act 2018, ratio of these two cases had been overruled. So now present situation is that in such cases, even in such cases, taking previous sanction is the mandatory. This will be conclusion, and concluding remark will be that action can't be taken against him without previous sanction of the central government. ये इसका निकल करके आएगा, ये रेशियो इसमें निकल करके आएगा। तो ये आपका एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप समझ गए होंगे। देखिए, जब हम आपको जब केस पढ़ाएंगे तो आर.एस. नायक का केस थोड़ी डिस्कस करेंगे। आर.एस. नायक के केस में बहुत रिमार्केबल बात कही गई थी। इसमें एक बात ये कही गई थी, ठीक है, एक प्रॉब्लम और मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर ये तो हम लोग का स्टार्टिंग क्लास इंट्रोडक्शन ही है, बाकी तो करेंगे। एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर देता हूँ, फिर हम आपको इन दोनों केस के बारे में बताएंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ से ईयर आप हटा दीजिए, क्योंकि ईयर रखते थोड़ा सा फैक्चुअली गलत हो जाएगा। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017, बट डोंट माइंड दैट इट वाज आस्क्ड इन 2017। Suppose that this question is going to solve at present time. मान के चलो कि क्वेश्चन को अगर अभी सॉल्व करना हो
तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रानी भाभी ज्वाइन कर पाई नहीं, अगर इमरजेंसी है रानी भाई, इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन you can call me, no problem. If you are regular students, I can consider, no problem. However, the technical problem is the big problems. Regarding the another problem is that, see, I had already told you that regarding Mr. Amisa, Mr. Nirmala Sitaraman, I had inserted in the questions, and you can put your name as what is that. See here that here Sri Rajendra. Sri Rajendra is working as a joint secretary in the state in the home ministry. Here, what is the point? Point is that Mr. Rajendra is working as a joint secretary in home ministry. It means if a person who is joined is doing business, he is joint secretary in the home ministry. It means he is the most favorite person of the home minister. देखिए, to be IS is a competency. To be IS is a competency, but to be joint secretary denotes your loyalty as well as capacity. जब आप IS बनते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका कैपेसिटी टैलेंट काम करता है, लेकिन आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हो, आप सेक्रेटरी बनते हो, अंडर सेक्रेटरी बनते हो, इसमें आपकी कैपेसिटी के साथ साथ आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए। क्यों लॉयल्टी होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस मैक्सिमम टाइम अपने इलेक्शन में बिजी रहते हैं, तो देश को रन कौन कराता है, उनको माइंड कौन देता है, ब्रेन कौन प्रोवाइड कराता है? जो ये सब ऑफिसर होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ये सारा जिम्मेदारी वो संभालते हैं। इसीलिए आप कई बार देखते हैं, मान लीजिए किसी स्टेट का कोई मिनिस्टर मान लीजिए इलिटरेट हो जाए या कुछ कम पढ़ा लिखा हो, तो उसको ब्रेन कौन देगा, कौन बताएगा कहाँ साइन लिखा है, क्या हिंदी में लिखा है, क्या अंग्रेजी में लिखा है, तो पढ़ ही नहीं पाएगा। वो सारा काम ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर करते हैं, उनको बताते हैं सारा काम। ये सब पोस्ट पे जो होल्ड करते हैं बहुत ही लॉयल होते हैं। तो मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर हम रख लें कि मिस्टर राजेंद्र इज वर्किंग एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द होम मिनिस्ट्री एंड अंडर होम, अंडर द फॉर द एग्जांपल अंडर द मिस्टर अमित शाह, एंड FIR is lodged against him by श्री संजीव। मान लीजिए श्री संजीव की जगह संजीव भट्ट ही ले लेते हैं एक एग्जांपल के रूप में, कि मिस्टर एन FIR is lodged against him by Mr. Sanjeev Bhatt. Why? For what things FIR was lodged? For taking bribe when he was working in the finance ministry, okay, under the Mr. Nirmala Sitaraman. So my point is that what is the important point in this case is and was. At present time, he is doing under the supervision of the Mr. Amit Shah. And allegation is that when he was working under the supervision of Mrs. Nirmala Sitaraman, at that time he had committed crime, he had taken the bribe. अब बताइए कि अगर जो व्यक्ति मिस्टर अमित शाह के अंडर में काम कर रहा हो, अगर उसके करप्शन के मामले में अगर सैंक्शन लेना पड़ जाए, तो क्या आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑफिसर के खिलाफ सैंक्शन देगी? अगर एक बार आप PMO में काम करते तो उम्मीद है कि आपको सैंक्शन मिल जाता, लेकिन अगर आप मिस्टर अमित शाह के अंडर में अगर आप शासन कर रहे, मतलब अंडर में काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सैंक्शन नहीं मिलेगा। As you know that Mr. Amit Shah is much more powerful than Mr. Amit Shah, Mr. Modi. So my point is that he is working under the joint secretary, under the whose guidance, under the Mr. Amit Shah. So although allegation is that when he committed crime, when he was doing work under the finance ministry. अब देखो एक्चुअली क्या है ना, पॉलिटिकल माइलेज कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकली कनेक्ट करने से ये होता है कि फैक्ट्स को समझने में आसानी हो जाती है, थोड़ा तुम्हारे ब्रेन पर अटैक होता है कि अरे सर ऐसे कैसे बोल दिए, तुम थोड़ा सा एक्टिव रहते हो कि नहीं कुछ बोलें तो हम कुछ रिप्लाई करें, कुछ काउंटर करें, तो कम से कम तुम कॉन्शियस रहते हो, बाकी जो भी चीजें हैं गलत से चलती रहती हैं। इसमें यही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जब फाइनेंस मिनिस्टर में काम कर रहा था, उसने ब्राइब लिया, इस बात को लेकर के
फिर इसके बाद वो होम मिनिस्ट्री में काम करने लगा, उसकी मिनिस्ट्री चेंज हो गई। एक ईमानदार ऑफिसर है जो एफआईआर लॉन्च कराता है कि जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करता था तब उसने क्राइम लिया। अब यहाँ पे राजेंद्र कह रहा है trial started against on the basis of said FIR was opposed by Sri Rajendra. On what basis he opposed? He opposed. Mr. Rajendra was saying that no, you can't take action against me. Why? If you want to take action against me, you have to take previous sanction from the competent authority. You have to take previous sanction from the competent authority. Otherwise, without taking previous sanction from the competent authority, you can't start action against me. अब राजेंद्र कह रहा है कि तुम हमारे खिलाफ अगर एफआईआर लॉन्च करना चाहते हो, केस स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम जाओ पहले मिस्टर अमित शाह के पास, मतलब मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के पास जाओ और हमारे खिलाफ वहां से सैंक्शन लेकर के आओ कि हाँ इसने क्राइम किया है और इसके खिलाफ केस चलाया जाए। तो देहात की कहावत है ना कि नो मन गेहूं हो ही न राधे घूमने जइहा। तो मतलब ये है कि न तुमको अमित शाह के यहाँ से प्रीवियस सैंक्शन मिलेगा, न तुम हमारे खिलाफ कभी केस चलाओगे। तो यही कह रहा है कि अगर तुम हमारे खिलाफ केस चलाना चाहते हो तो जाओ वहां से सैंक्शन लेकर के आओ, तब तुम हमारे खिलाफ केस चला सकते हो। लेकिन अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहती है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कहती है कि नहीं, इस मामले में सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एलिगेशन है कि तुम फिनांस मिनिस्ट्री में जब काम करते थे तब तुम ब्राइब लिए हो। अब तुम्हारी मिनिस्ट्री चेंज हो गई, जब चेंज हो गई तो उस चेंज होने के बाद हमें सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर तुम होम मिनिस्ट्री में रहते हुए अगर कुछ करप्शन करते और होम मिनिस्ट्री के दौरान ही अगर तुम्हारे खिलाफ कोई एलिगेशन होता तब हम सैंक्शन लेते हैं। लेकिन एलिगेशन का चार्ज क्या है कि तुम फिनांस मिनिस्ट्री में जब थे तब तुम्हारे खिलाफ एलिगेशन का चार्ज है। दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू टेक प्रीवियस सैंक्शंस। ओके, so here point is that now what is the answer? Okay, I will summarize the answer. I was teaching in Hindi and Bhojpuri language. I forgot that Ranibao is also taking the class. Here question is very simple. That one is the corrupt officer who was doing in the finance ministry and he made huge corruptions, and after that he joined home ministry. FIR was lodged against him. Why? It was alleged that he had taken the corruptions when he was doing job in the finance ministry. He opposed. According to him, you can't take action against me. If you want to take action against me, go to the home ministry and take the previous sanctions and start action against me. But opposite party saying that no, allegation is that regarding the finance ministry, so there is no need to take previous sanctions from the home ministry. Now what will be answer of this case? As you know that there are two answer of these questions. Why there are two answer of these questions? One is answers based on the judgments which have been prescribed in your syllabus. Okay, according to that, here the one answer is based on the ratios of decision of R.S. Naik versus and Abhay Singh Chautala case, and another answer is based on the after this amendment. Here in this case, answer can be divided into two parts. According to this point, according to the ratio of these cases, previous sanction is not necessary. Previous sanction is not necessary. While and what would be effect? Yes, according to this, in this case, previous sanction is necessary. What is the important point here? There are two important points. Wait for 1 minute. एक मिनट रुक जाओ, रिस्पॉन्स तो दे दो। क्लिक हो रहा है अभी। ठीक है, मैं हाँ आ गया। यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो इसका पॉइंट ये है, जैसे इस केस में क्या है, इसमें बहुत ही आर.एस. नायक का जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है और होल जो जजमेंट हम डिस्कस करेंगे regarding the Abhay Singh Chautala case, whole the judgment was discussed in the ratio of the R.S. Naik case. R.S. Naik case was held that if portfolio is changed, if your portfolio is changed
or your nature of job is changed, in that case there is no need to take the previous sanctions. अगर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, डिपार्टमेंट अगर आपका चेंज हो जाए, डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए कि आपका फिनांस मिनिस्ट्री टू होम मिनिस्ट्री हो जाए, it means earlier you were doing job in the finance ministry and now you are doing the job in the home ministry. If allegation is regarding the corruptions which were done during the finance ministry, in that case no previous sanctions. But allegation is regarding the corruptions done during the home ministry, yes, here previous sanction is necessary. Why? Because court said that this is the matter of, sorry, court said that in this case you will be treated as a retired. You will be treated as a retired public servant. Okay, so no sanctions necessary. So no sanction is necessary. And here in the case of home ministry, you are doing the job here. Here you will be, here you are working. Here you are working at present time. In that case, sanction is mandatory. In this case, sanction is mandatory. Okay, mandatory. Spelling ठीक गलत हो जाता है तेजी से लिखने में. Sanction is mandatory. In the same case, so it was observed in this particular case. Okay, now point is very clear. If we will discuss here, R.S. Nayak case was discussed in 1984, Antule was discussed in 2011. So according to the ratio of judgments, no sanction is necessary. Okay, but after the amendment, whole situation has been changed, and after the amendment, here the previous sanction is necessary. Do you know why? Because government have inserted clause section 19 clause 1 explanation. What is the explanation? Here I want to take 2 minutes. First of all, I will discuss the explanation. By that explanation you can understand. For the example, what is the explanation? I want to read here that for the purposes of subsection 1, the expression public servants includes. Public servant includes means, as you know that regarding the age, if you are at present time working, there is no dispute. You are the public servants. There was from the very beginning it was the clear. But regarding the retired public servants, this clause talks about retired public servants. Regarding the change of portfolio, regarding the change of the department, regarding the change of the constituency, this part is clause B. Without understanding explanation, any students can't understand and can't solve these problems. So what is the explanations? And we think this explanation has been inserted in 2018. Now point is very clear. I want to discuss the explanations, how to read the explanation. For the purposes of subsection 1, the expression public servant includes. It means these students are taking classes including Raniba. Including Raniba means already several students are taking and I am including some more students. Okay. Includes means we are going to extend definition of that words. Here the such person includes such person. What is the meaning of such person? After that, see. Who has ceased to hold office? Who has ceased to hold the office during which the offense is alleged to have been committed. Suppose that allegation was that Mr. Akres had committed the offense, taking the bribery when he was the Tahsildar. Okay, and now he is the retired. Regarding the retired officers, this clause A will cover. Under this particular clause A, all the retired public servants will also come under the definition of public servants. It means even in that cases, previous sanction is necessary. Okay. Clause B. Clause B, there are two parts of the clause B. Anyone can't understand without understanding the word and. And denotes that both the conditions are mandatory. And denotes both the conditions of this. Suppose that I will cite here example. Okay, with the example we can understand in a better manner. Suppose that such person here, such person who has ceased to hold office during which the offense is alleged to have been committed.
who has seized the hold the office. For example, in your problem, here Rajendra was working in the finance minister. Rajendra was working in the finance minister. Was important word is that was. It means he has ceased to hold the office from the finance minister. And now what is doing? Now he is okay. Now Rajendra is holding the office, holding an office other than office during which the offense is alleged to have been committed. other than अदर देन मतलब फिनांस मिनिस्ट्री को छोड़ करके, अदर देन ही इज होल्डिंग एन ऑफिस, अदर देन इट मीन्स ही इज होल्डिंग ऑफिस अंडर द होम मिनिस्ट्री. He is holding the office under the home ministry. It means this talks about changing of the portfolio. This talks about changing of the office. So now with the explanation of this, we can clearly say that regarding these parts, regarding the what is the problem here is changing of the portfolio. And this in that's why in these circumstances it was said that taking sanction even in case of changing of the portfolio, sanction is necessary. It means if you want to take action against me, please no need to go to the Mrs. Sitaraman, because from there I have seized. You have to go to the Mr. Amisa, and from there you have to bring the sanctions. Okay, this is the point. This is the explanations I will discuss later on. Okay, now I will summarize within 6 months the whole class, and from the next class I will take the proper class in a systematic manner. That is the Abhay Singh Chautala and another versus CBI. Okay, चलो summarize कर देता हूँ. If you have any problem, please ask. If you will not ask any question, I will presume that I am a good teacher, and that is the good. मजा लेते रहता हूँ, तुम सब भी गुरुजी भी छोड़ते नहीं है. See here is a, as you know that my dear friends, here we are going to discuss what would be happened if one public servant ceased from one office and joined to another office. What is the whole crux of this judgment? Whole crux of dispute that there are three categories of the public servants. Parth attend कर रहे हो class को? Parth? जी सर. Yes. Okay, good. Now I will divide the public servants into three categories. First is that three categories. नहीं ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा. वेट कर लो. I will divide the public servant into two categories. Here first category that acting public servants, other is the retired public servants. Okay. Again I will divide acting public servants into two categories. Acting public servant in two categories. First is that changing from one portfolio to another, and another is that he is working only in one office. Just suppose that here Akhilesh is the clerk. He is serving in only one office, that is the law faculty के ऑफिस में वो क्लर्क है. उसे कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एक ही जगह वो कई सालों तक सर्विस दे रहा है. जैसे हमारे यहाँ ऑफिस में क्या हुआ है, मिस्टर पंत जी थे, बहुत ही कॉम्पिटेंट मतलब क्लर्क हुआ करते थे डीन ऑफिस में. उनका क्या साथ हुआ कि हमारी फैकल्टी में जब वो ज्वाइन किए तो उनको स्पेशली फैकल्टी में रोक कर ही रखा गया कि नहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो जैसे मान लीजिए एक यहाँ पब्लिक सर्वेंट है, एक्टिंग तो है बट ही इज नॉट चेंजिंग हिज पोर्टफोलियो. He is working at only one place. And another situation is that here another person is that suppose that other officer is that Sabaj. Regarding the Sabaj, sometimes he was changed in the Kironimal college, sometimes he was sent to the Ramjas college, sometimes he was sent to the law faculty, sometimes he was changed to the administrative block. मतलब ये है उसका हालात कि जहां जहां जिस डिपार्टमेंट में जा रहा है नरक मचा दे रहा है. 6 महीना बाद इन लोग करेंगे भाई इसको चेंज करो चेंज करो चेंज करो.
वो क्या कर रहा है, एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ घूम रहा है, ढूंढ रहा है। अब ये भी पब्लिक सर्वेंट है, बट हिज पोर्टफोलियो इज चेंजिंग डे बाय डे, and he is another officer whose portfolio is not going to change day by day. And third is that he is the retired, he served and he had already retired. Now our problem is that not on this point, our problem is not on the retired public servant. Why? Because in the Kalicharan case versus Kalicharan Mahapatra versus state of Odisha, we have already settled the problem. According to the case, in the case of retired public servant, there is no need to take the public servants. Although ratio of college children had been changed by the amendment, but according to the judgment, no need to take the previous sanction in the case of retired public servants. Regarding the active public servants, there was no regarding this point. There is no doubt if there is one officer acting one department, he is working at present time. You have to take the previous sanction. There is no disputes. Our judgment, our dispute is that if there is one officer who is making corruptions and his department, his portfolio is changing frequently, what would be happened? Whether in his case previous sanction is necessary or not. जैसे मान लीजिए कि इस प्रॉब्लम में सपोज दैट शाहबाज ज्वाइंट लॉ फैकल्टी, he made a corruption. After making the corruptions, he was transferred to the Santaram College. Suppose that Santaram College. Question was that his portfolio has been changed, but still he is a public servant. And here the competent authority wants to start action against him, whatever corruption has done during the law faculty, whether previous sanction is necessary or not. This is our problem, and this problem we will discuss in the next class. And answer is that, and I hope that in the next class you will come after reading one page. Okay, please at least read one page. Without your reading, it's not possible to teach in very frequent manner. And again, enjoy your life. Okay, ठीक ना? इतना आज का class sufficient. Happy Diwali, sir. Happy Diwali each and everyone. Okay, enjoy your life.